So hi friends, I'm Dr. Anshul Bansal again joining you on the Unacademy platform. In today's YouTube live session, we'll study about spina bifida. Short questions आते हैं इसमें, not related to orthopedics but in surgery etc. Subjects में एक दो questions generally आते रहते हैं, तो very short topic but very important and interesting one. बेसिकली 5 या 6 टर्मिनोलॉजीज है जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए and you should be and you will be able to solve all the questions. Okay, so currently I'm working as an orthopedic house surgeon in SMS Hospital Jaipur, and I have cracked the NEET PG examination last year, that is in 2020 only. And here we'll study orthopedics in depth so that you can not only crack your NEET PG INICT like competitive examinations, but also you can do well in your prof or university examinations. And we will have special focus on the image based questions, the x-rays, the clinical scenarios etc., so that you can understand the concepts very well and also you can do well in your coming next type of examination. Okay, so let's start today's session, and before starting I would just briefly guide you about our various subscription plans that are available on the Unacademy for the NEET PG. And the first one is a plus subscription. In plus subscription, the subscribers will get access to all our live as well as recorded classes, our entire QBank, and they can compete in live tests and quizzes, all of which is found by the topmost faculty for NEET PG in India. And also we'll allow the subscribers to log into multiple devices with the same account so that they can study on any device of their choice at any time. And also for the students who will be subscribing for 12 months or more, we will be shortly providing them with a printed notes. Okay, just wait, I have a very important call, let me take it. गुड इवनिंग सर, हॉस्टल तो वहाँ पे मूवमेंट होगा सर? हाँ सर, बोलिए सर। आईसीयू में सर अभी, हाँ सर, बेड नंबर 3 सर। क्या हुआ सर? मैं आता हूँ सर, पक्का सर? Sorry guys, there was an urgent call from the hospital. Okay, so where were we? Yes, the plus subscribers को ये सारी चीजें मिलेगी, and you can use my code, that is Anshul B10, while subscribing to get extra 10% off. The second one is the iconic subscription, and this is the best subscription. Best subscription not only on the Unacademy but across any digital platform in India for the NEET PG. And what makes this best is that apart from the things that I have told you earlier, in addition you will get the PrepLadder and the entire PrepLadder, including all of its QBanks, the video lectures, the rapid revision courses, grand test quizzes, everything. And on Unacademy Extra you will get well structured live batch wise course classes, and we have structured a batches and formulated a course in such a way so as to build your basic concept about any subject or topic first, then going into its in depth. And also we'll cover same topic जो different subjects में आता है, like spina bifida है, तो इसमें syringomyelocele and myelodysplasia etc. you also study in your anatomy part, in your surgery part, and also in the orthopedics we are reading this. So in any subject we'll cover that topic, and we'll also revise the things that you have studied in the previous subject so that revision अच्छे से होगा and you will be able to properly build your concepts. And also the iconic subscribers will get an individual test assessment sheet after every test that they give, so that they can analyze themselves कि yes, this subject or this topic requires more revision, or what are the things that I am missing, or which type of questions are coming or can be framed. Okay, it is very important to plan your journey, and these analysis of the test papers play a very important role. So you will get all this in the iconic subscription, and you can subscribe for this course, and while subscribing you can use this code of mine, that is Anshul B10, to get extra 10% off. Okay, and special class I always
focus on this special class, and I always pursue you all to take the special classes because they'll give you extra edge over the competitors, and they are special because they will give you live classroom like feel where you can interact it with your educators in the live class. You can solve your doubts there and there only. You can participate in polls. You can watch it anywhere, anytime. What you have to do, you have to just download the mobile application of the Unacademy and subscribe using my code AnshulB10, both of which are absolutely free. And also you will be getting the digitalized notes of every special class that you will attend. Okay, so please do attend this special class. And to make a live classes more interactive, we have launched a new feature called as raise a hand feature, where you can just digitally tap on the button to raise a hand digitally, and the educator will be notified so that you can solve your doubts and query there and there only. Because in COVID times everybody is preparing from the digital platform only, and to make this digital platform more interactive and to increase the two-way communication, we have launched this feature. And also you should subscribe for our QBank because it is very good. Number of questions to hate that are 25,000 plus, but the major beauty is that it contains everything that you need for your preparation. The last year, previous year recall questions, the high yield MCQs, the repeated MCQs, the images, the x-rays, CTs, MRIs, recent advances, and very importantly clinical based scenarios, instruments, etc. All the entire theory will also be covered. So everything is covered in this QBank. So you should solve this QBank. Okay, it is very important for preparing for any competitive examination, and you can subscribe for a QBank using this code to get extra 10% off. Okay, now in October 17th, on October 17th, we are organizing two grand tests, both of which are absolutely free. The first is for the INI CET between 2 to 5 p.m. in the afternoon, and the second is for the FMG between 10 a.m. to 1 p.m. on 17th of the October. And these two are very important because both exams are very near. INI CET is in November, exactly on November 14th, and FMG is in December. So very less time is left, so you need to have a examination wali feel, and also you need to prepare well now. And think it like this way, it's 3 hours of giving the examination and 3 hours of analyzing and reading the explanation. In 6 hours mein you will cover the topmost 200 topics for the INICT and the most important 300 topics for the FMG. In just 6 hours you will revise this, so it is very important. So you should please give this test. And now focusing on different types of students who are giving their examinations in different years, like for 2023 as well as 2022 batch, we have started a dedicated courses from 13th of the October. And also we have started a very important and unique, that is clinical case discussion and instrument batches, and it is very good and very high yielding for you, because all the things that you read theoretically, sometimes you are not able to understand them, if you are not able to clinically correlate them. But if you see them कि yes, जो चीज मैंने पढ़ी है वो clinically ऐसे दिखती है, patient के अंदर ऐसे दिखती है, so you will never forget it, you will revise it very well. So this is very important, and also you will generate your interest towards the subject topics, and this is very important for the preparation of any type of examination. So you can subscribe for any of these courses while using my code, and you will get extra 10% off. Now here are the subscription packages of our iconic as well as the plus subscription, and here you can see that the cost per month decreases significantly if you increase the duration of your course. Okay, so economically भी अच्छा है, as well as academically also it is beneficial for you to go for longer duration, because starting से single source of information होना बहुत important है, तभी आप अच्छे से concepts build कर पाओगे and जल्दी revise कर पाओगे. So please do subscribe for the subscription package with longer duration, and while subscribing you can use my code to get extra 10% off.
Okay, so let's start today's lecture about spina bifida. Let's crack NEET PG with Unacademy. Okay, so spina bifida नाम से पता चल रहा है क्या हो गया, spine या spinal cord जो हो गया वो bifid हो गई. Okay, okay, there are बाइफिडा और दी बाइफिड स्पाइनल कॉलम. सो कोई भी चीज अपने बॉडी में होती है तो मोस्टली दे आर due to some intrauterine malformation and mostly they are the congenital. So this is also a congenital disease and obviously spine is at the posterior part. So क्या होता है during the डेवलपमेंट, क्या होता है जो नोटोकॉर्ड के पास में देयर इज मीजोडर्म. ओके, सो मीजोडर्म अराउंड द नोटोकॉर्ड फॉर्म्स द वर्टिब्रल बॉडीज एंड इस वर्टिब्रल बॉडीज के पीछे देयर आर two projections from each body which grow around the canal and form the entire vertebral arch. So जो fully formed vertebral body होती है या sorry vertebral column होता है उसमें vertebral body, see this is the vertebral body and this is the vertebral arch. Okay, so vertebral arch में there is transverse process, there is spinous process. Okay, transverse, this is your, yes, this is your transverse process and posterior most is your spinous process. This is your anterior most part. Okay, so this spinous process and transverse process के बीच में this part is your lamina or lamina and this part is your pedicle. Okay, and this is your foramina from where the spinal cord runs through this vertebral column. Okay, so see here you can see कि this is the body of the vertebra in the initial stage and इसके around there is the notochord which forms the spinal cord from the germ tube. Okay, so these are the myotomes and these are the caudal as well as the cranial sclerotome and this is the notochord and this is the neural cord. Okay, this is the neural cord. So neural cord के चारों तरफ there will be formation of the vertebral arch and it will be enclosed inside the vertebral arch. Okay, so what is spina bifida? Spina bifida generally it is a open defect जहाँ पे क्या होता है, there is a defect in the posterior part जिसमें से the skin as well as the dura and the meninges they come outside the body from the posterior part and with them in some cases different types of spina bifida hota hai. So in typical spina bifida there will be herniation of the spinal cord in that sac also. Okay, spinal cord in that sac also उसमें भी क्या होगा, there will be herniation. So it is very important कि yes ये image सबको याद होनी चाहिए and this is a open defect you will see like this. Okay, now the two halves of the vertebral arch जो होते हैं they fuse in the thoracic region first. So thoracic region में first fuse होंगे and from where there the fusion will extend in the upwards and the downwards way and दोनों processes fuse होके एक single spinous process बनाएंगे. Okay, so फ्यूजन अगर प्रॉपर है तो देयर विल बी सिंगल स्पाइनस प्रोसेस एंड द एंटायर स्पाइनल कॉर्ड विल बी कवर्ड विद दिस वर्टिब्रल आर्च. बट इफ देयर इज फेलियर और सम malformation due to this anomaly in the fusion of these arches, it will give rise to the spina bifida. It will give rise to the spina bifida. So it is often associated with maldevelopment of the spinal cord and the membranes. Okay, now important चीज अब आता है that is the types of the spina bifida. Okay, there can be mere fusion of the spinous process जिसकी वजह से bifid spinous process हो, सिर्फ स्पाइनस प्रोसेस ही बाइफिड हो सकता है या फिर देयर कैन बी अ लार्ज बोनी डिफेक्ट्स और इवन द डिफेक्ट इन द न्यूरल एलिमेंट्स. तो दो टाइप के स्पाइना बाइफिडा मेजरली होते हैं. फर्स्ट इज द स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा एंड सेकंड इज स्पाइना बाइफिडा अपर्चा. नाम से पता चल रहा है अपर्चा मींस देयर विल बी अपर्चर यानी देयर विल बी ओपनिंग लाइक वी हैव सीन इन द इमेज बिलो वेयर occulta is missed or hidden spina bifida यानी
बाहर से there will be no tuft of the hairs or that boggy sag that is hanging around. Okay, there will be no opening, but inside there will be hidden spina bifida. Okay, this is your spina bifida occulta. Okay, so here you can see this is your normal spine. The first one is a normal spine where this is the vertebral body. यहाँ पे this is the spinal cord and this is your spinous process, and इसके पीछे this is your posterior longitudinal ligament. This is your interspinous ligament, sorry, this is your posterior longitudinal ligament, ये है. This is your anterior longitudinal ligament and this is your supraspinous ligament here. Okay, so this is your normal vertebra जहाँ पे ये क्या होता है conus medullaris and there these are the cauda equina. Okay, but in spina bifida occulta देखो बाहर कोई भी opening नहीं होगी, but at the end there will be branches, abnormal branches and thickening of the spinal column like this. And in meningocele एक टाइप होता है मेनिंजोसील एंड एक होता है मेनिंजोमाइलोसील. तो नाम से ही पता चल रहा है माइलो मींस spinal cord. So meningocele में there will be only sag which there will be a sag which contains only the meninges. Okay, whereas in meningomyelocele क्या होगा, एक sag होगा जिसमें meninges plus myelocele, that is the spinal cord like this. There will be both the elements. Okay, so occulta अपन ने देख लिया है. It is the least serious but the most common. So most common type of spina bifida is the spina bifida occulta, which is the least serious. Good prognosis होता है, बहुत सी बार तो पता ही नहीं चलता है. Okay, so it is the most common type and discovered only on x-rays and the scan. And second is the meningocele, which is the next most serious, and meningomyelocele obviously जब spinal cord भी herniate हो जाएगी तो this will be the most serious. So most serious and the worst prognosis वाली होगी meningomyelocele, and obviously this is the least common because almost 90% से ज़्यादा केसेस जो होते हैं they are born as a stillbirth. Okay, they are stillborn या फिर hardly few hours they survive. Okay, so this is the myelomeningocele. तो सबसे पहले we'll read about the spina bifida occulta, which is the least serious, best prognosis and the most common wali and the mildest wala spina bifida. Okay, so there will be bifid spinous processes of the vertebra, and the commonest site is very important. spina bifida occulta की commonest size is their lumbosacral spine. इसमें भी choose करना पड़े तो S1. Which one? S1 is your most common site. Okay, so externally देखेंगे posterior aspect पे तो skin will be normal. डिम्पलिंग यस हो सकती है, एंड दिस लाइपोमेटस मास्क एंड डर्मल साइनस और टफ्ट ऑफ हेयर, ये सारी चीजें जो टिपिकल फीचर्स होते हैं स्पाइना बाइफिडा के, ये हो सकते हैं, बट देयर विल बी नो ओपनिंग. ओके, नाउ न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट यस हो भी सकता है, नहीं हो सकता, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप. ओके, नाउ द मेजर थिंग इज दैट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द सिवियरिटी ऑफ द बोन डिफेक्ट. ओके, सो ये ऑप्शन में बहुत कॉमनली आता है. अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पाइना बाइफिडा इज रॉन्ग, ओके, तो या करेक्ट, तो उसमें ये स्टेटमेंट बहुत कॉमनली आता है. तो ये आपको पता होना चाहिए दैट न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द बोनी डिफेक्ट. एंड मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट का जो मोस्ट कॉमन साइन होगा ऑब्वियसली दैट विल बी दी लोअर लिम्ब के अंदर मसल इम्बैलेंस, और देयर विल बी मोटर लॉस एंड मसल वास्टिंग इन दी लोअर लिम्ब. ओके, एंड दिस विल लीड टू फुट डिफॉर्मिटीज. एंड आपको ये एक चीज याद रखनी है कि मोस्ट कॉमन फुट डिफॉर्मिटी दैट इज एसोसिएटेड विद स्पाइना बाइफिडा इज योर equinovarus. Okay, what is the most common foot deformity associated with spina bifida? It is your equinovarus. Okay, now जो neurological impairment होता है, ये obviously if there will be some compression or some
malformation of the spinal cord तभी होगा. So it can be of various types. क्या होता है, if there is this sag, okay, there is this sag, and a sag, say if there is like this, if there is some adhesions or some fusion of the spinal cord to the undersurface of the skin by fibrous membrane, which is called as tethering of the cord. So this is called as membrana reunions, नाम से पता चल रहा है. और this fusion can be with the phylum terminal also. But the most two important things जो नाम से आपके आती रहती है, these are the diastomatomyelia and the myelodysplasia. So what is diastomatomyelia? Diastomatomyelia में क्या होगा, the spinal cord will run as a single spinal cord, but जहाँ पे defect होगा, it will get bifurcated in two. Okay, there will be two spinal cords, but there will also be a vertebral body के अंदर जो canal होती है उसमें there will be anterior posterior bony spur like kind of thing, and these two will get attached to the two different columns formed by this. So this is called as the diastomatomyelia. Okay, we'll see in the image. Okay, here you can see this is your bony bar, these are your bifid type of spinous process. Okay, and this is your bony bar. Okay, here you can see ये एक single spinal cord है, but यहाँ पे spinal cord दो में convert हो गई है. Okay, and here you can see there is two spinous processes. Okay, two spinous processes, and this is your bony spur. This is your bony spur. So this is called as diastomatomyelia. Okay, so इसमें भी there will be neurological impairment. So diastomatomyelia is called as the split cord. ओके इसको क्या बोला जाता है, इसको प्यार से बोलते हैं स्प्लिट कॉर्ड. एंड देयर विल बी हेमीकॉर्ड्स, दो हेमीकॉर्ड्स विच विल बी यूनाइटिंग अबव एंड बिलो द split. Okay, so they are of two types. इतना deep में आपको नहीं जाना है. Okay, and they are associated with obviously some other anomalies which are called as the segmentation anomalies. Okay, जहाँ पे segmentation जो होता है उसमें defect होता है, like the hemivertebrae और the butterfly vertebrae. ये अपन आगे एक question के form में देखेंगे. Okay, so this is your diastomatomyelia. Here you can see दो स्पाइनल कॉर्ड है, एंड इससे ही एक रिलेटेड वर्ड है दैट इज डिप्लोमाइलिया. डिप्लोमाइलिया मींस टू स्पाइनल कॉर्ड्स. तो डायस्टोमेटोमाइलिया में तो स्पाइनल कॉर्ड एक ही होती है, बस डिफेक्ट वाली जगह पे दे बिकम टू, वेयरएज डिप्लोमाइलिया में तो ऊपर से ही फ्रॉम कॉन्जेनाइटली देयर आर टू spinal cords, okay, in which the cord is duplicated. Okay, whereas in diastomatomyelia the single cord is splitted. So now next is myelodysplasia. Myelodysplasia is basically a entire syndrome जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है. तो माइलोडिस्प्लेजिया नाम से पता चल रहा है व्हाट इज दिस. This is abnormal formation or abnormal development of the spinal cord, defective development of the spinal cord. Okay, so it can be a spina bifida occulta or meningocele or myelomeningocele और the lipomeningocele जिसमें फैट टिश्यूज भी साथ आ जाएंगे, एंड विच इज ये सब टाइप है स्पाइना बाइफिडा के. बट कोई आपसे पूछे व्हाट इज स्पाइना बाइफिडा, सो जो टिपिकल स्पाइना बाइफिडा होती है दैट इज योर माइलोमेनिंजियोसील. द टिपिकल स्पाइना बाइफिडा इज योर माइलोमेनिंजियोसील. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग कि माइलोडिस्प्लेजिया जो है इट इज अ क्यूमुलेटिव टर्म विच इज associated, and it is nothing but defective development of the spinal cord. Okay, now what are the treatment? So कोई symptomless treatment है, mostly the occult वाले patients जो होते हैं. ओके, सो इसमें देर इज नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड. ओके, अगर कभी बैक पेन वगैरह हो जाए तो फिजियोथेरेपी एंड एनसेड्स विल वर्क वेरी वेल. बट अगर किसी में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है देन फर्स्ट थिंग यू need to do is to evaluate अच्छे से कि what is the cause, okay, and at which level there is the defect, and the
investigation of the choice or the imaging modality of the choice is your MRI. Okay, it is your MRI. ओके सो ऑर्थोपेडिक की तरफ से क्या क्या ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है? ऑर्थोपेडिक की तरफ से जनरली ट्रीटमेंट दैट इज रिक्वायर्ड इज इन दी प्रोग्नोसिस ऑफ एनी न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, और अगर कंप्रेशन है सो टू प्रिवेंट द वास्टिंग, सो to prevent and correct any deformities if they are happening by the orthosis or the braces. Okay, and if there is any residual muscle power, then what you do, अगर मसल की वेस्टिंग होती है, you can do the tendon transfers and joint stabilization also, and giving support for walking by the braces and the orthosis only, so there is no muscle wasting or the minimal atrophy of the muscles. Okay, now second is the spina bifida aperture. Aperture means aperture यानी opening होगी. So okay, so vertebral arches के बाद में there will be defect in the soft tissue, skin and often the meninges, leading to the formation of the opening. Okay, and very severe cases nerve tube itself can be exposed. Okay, so इसमें जो commonest site होती है, जो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा था उसमें commonest site was a lumbosacral spine S1, whereas in aperture the commonest site is your dorsolumbar, that is your thoracolumbar spine, and most commonly at the level of L4 L5 पे it is most common. Okay, तो अब ये जो open या aperture होता है it is of different types, meningocele and meningomyelocele. अपन ने पहले ही देख लिया क्या होता है. meningocele में sac होगा, उसके अंदर सिर्फ meninges होगी with CSF, whereas meningomyelocele में there will be a sac at the posterior जो आपको naked eye से भी दिख जाएगा, and there will be sac, meninges as well as the spinal cord column, spinal cord. But remember इसमें जो spinal cord होगी, spinal cord will be normal, यानी spinal cord developmentally normal होगा. There will be no defect or anomaly in the spinal cord in case of meningomyelocele. Okay, now next is syringomyelocele, syringomyelia and myelocele. यही differences आपको याद रखने हैं. अपर्चा और ओकल्टा में क्या difference है, फिर उसके बाद meningomyelocele and in 5 terms में क्या difference है, एंड एक व्हाट इज डायस्टोमेटोमाइलिया एंड व्हाट इज डिस्प्लेजिया. बस यही क्वेश्चंस आएंगे और ये कॉमन क्वेश्चंस है एंड वेरी कंफ्यूजिंग आल्सो, तो एक बार समझ लो, नाम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा. तो सिरिंजोमाइलिया, फर्स्ट वील रीड अबाउट सिरिंजोमाइलिया. सिरिंजोमाइलिया को ऐसे समझो, सिरिंज विथ माइलिया, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर देयर विल बी अ सिरिंज, यानी देयर विल बी अ CSF फ्लूइड का एक सैक या फिर मेनिंजियल सैक. ओके, within the cord like this. Okay, here you can see development of a fluid filled cyst, that is syrinx within your spinal cord. Spinal cord के अंदर this, और ये देखो यहाँ पे there is a defect in the CSF, so उससे there will be the formation of the syrinx. So with time cyst will enlarge in most of the cases and they will damage your spinal cord, and it will cause the neurological symptoms like neuropathic pain, weakness and other symptoms. Okay, so this is your syringomyelia. This is your syringomyelia. Now what is syringomyelocele? syringomyelocele में क्या होता है, there is a defect in the spine. Okay, but it is continuous with the central canal and there will be protrusion like this. Here you can see where is the photo. Yes, here you can see कि syringomyelocele में क्या होगा कि there will be defect. Okay, so there will be skin होगी and there will be CSF fluid and there will be what spinal column in that. This is called syringomyelocele. Okay, so क्या होता है, occulta में there is no sac, but in myelocele, now what is myelocele, नाम से पता चल रहा है, myelocele means seal के अंदर spinal cord, यानी कि sac के अंदर there is
a spinal cord and only spinal cord. So myelocele is the commonest type of spina bifida in case of open ones, and they are stillborn and alive भी होते हैं, तो within few days they die. Okay, so clear हुआ. myelocele is पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड इज इनसाइड द सैक. सिरिंजोमाइलोसील स्पाइनल कॉर्ड के बीच में देयर इज फ्लूइड फिल्ड सैक. एंड व्हाट इज सिरिंजोमाइलोसील, सॉरी सिरिंजोमाइलिया, सिरिंजोमाइलिया इज स्पाइनल कॉर्ड के अंदर फ्लूइड फिल्ड सैक. एंड सिरिंजोमाइलोसील, सील आगे यानी सैक होगा, तो देयर विल बी अ पोस्टीरियर सैक जिसके अंदर देयर विल बी द स्पाइनल कॉर्ड. एंड स्पाइनल कॉर्ड अपन देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड will be bifid. Okay, so there will be severe paralysis in case of open जो spina bifida होती है aperture में, there will be paralysis whether mild or severe. And orthopedics से related ये एक important question है that which is the most common defect or deformity in case of spina bifida. It is the flexion adduction deformity of the hip with deformities of the foot. And foot में most common was your equinovarus. So foot में most common is equinovarus and hip में flexion adduction is the most commonest deformity. Okay, so muscle imbalance की वजह से होते हैं and there will be urinary and bowel incontinence etc. So treatment इसका भी सेम ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक डिफेक्ट है उसका ट्रीटमेंट विद ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट लाइक प्रॉपर केयर एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द मसल वास्टिंग एक्सेट्रा, टेंडन ट्रांसफर्स इज रिक्वायर्ड एंड यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस. सो क्या होता है, जो मेनिंजोमाइलोसील होती है उसमें सील यानी सैक होगा, माइलो यानी स्पाइनल कॉर्ड होगा एंड मेनिंजो मींस मेनिंजेस होगा. So a sac which contains nerve tissue as well as. Okay, but इसमें क्या होता है, the central canal के साथ ये communicate या join नहीं होता है. But if any of these defect will communicate with the central canal of the spinal cord, तो उसमें क्या हो जाता है, syringo word add हो जाता है. Myelo means spinal cord, but syringo means spinal cord and that to the central canal of the spinal cord. तो syringomyelocele में क्या होगा, open defect तो होगा but और nerve tissue भी होगी, but there will be connection with the central canal. Here you can see कि first one is your first one, यहाँ पे there is defect and there is no nerve tissue, तो only meninges, तो this is your meningocele. Second में here you can see nerve, the spinal cord is normal in formation. Okay, so this is your myelomeningocele. Whereas in syringomyelocele में क्या होगा, there will be connection with the central canal or called as the myelocystocele. Okay, so here you can see this is your central canal and spinal cord यहाँ पे normal हो गई, यहाँ पे normal हो गई, but there is this type of defect. This is called as the syringomyelocele जिसमें central canal के साथ there will be a connection. Okay, so confusion नहीं होना है. meningocele तो बहुत easy है, confusion होगा myelomeningocele के अंदर and syringomyelocele के अंदर. So ये ध्यान रखना है, इसमें difference ये नहीं है कि meninges होगी कि नहीं होगी. No, the difference is that कि the word is syringe, that is there will be connection with the central canal. And if there is only myelocele, माइलोसील का मतलब हो जाता है कि the main column of the spinal cord जो होता है, not the end वाले nerve roots, they are in the sac. Okay, like this is your myelocele. Okay, so ये बहुत easy था, just इतना छोटा सा ही topic है आपका spina bifida. Okay, now let's have some questions regarding spina bifida and other some more questions about regarding the spine. Okay, so कोई भी डाउट हो स्पाइना बाइफिडा में you can ask in the live chat box. Okay, differentiation बहुत important है. meningocele, meningomyelocele, myelocele, syringomyelocele and syringomyelia.
एंड डायस्टोमेटोमाइलिया क्या होता है ये याद होना चाहिए, एंड डिप्लोमाइलिया क्या होता है ये याद होना चाहिए. तो लास्ट में आई विल रिवाइज दिस अगेन फॉर यू. ओके, सो the question is, are there any treatments for spina bifida before birth? Yes or no? Okay, so I'll give you 15 seconds to answer in the live chat box. So yes, there are treatments nowadays for spina bifida before birth, क्योंकि USG and all में you can easily see the open spina bifida का defect अगर exposed spinal column है, so they can perform the surgery before pregnancy, that is intrauterine, to close this. ओके, एंड अगर बाद में फिजियोथेरेपी एंड ऑल अच्छी रही है, सो द चाइल्ड विल इवन बी एबल टू वॉक विद क्रचेस. बट एक प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखी गई है ऐसे में, दैट इज they are generally preterm or premature deliveries, so you have to take care of this thing. Okay, now next is, which of the following are health issues a person with spina bifida might have? Okay, so here are your 15 second. A, B, C, D and E. ओके, सो वेरी इजी, ऑल ऑफ द अबव. हाइड्रोसिफिलस यस हो सकता है, बहुत कॉमनली एसोसिएटेड होता है हाइड्रोसिफिलस स्पाइना बाइफिडा के साथ में. यूजिंग बाथरूम डिफिकल्टीज, दैट इज यूरिनरी एंड bowel and bladder difficulties, incontinence, skin conditions, yes, depression and all these are associated with the spina bifida. So can a person with spina bifida fully participate in life? Okay, so it is yes, because most common type of spina bifida is spina bifida occulta, and isme it is called as the hidden one because mostly are missed during the lifetime, and they are generally an accidental finding. They are generally an accidental finding. Okay, so the correct answer is yes. So which is the most severe form of spina bifida? Here are 15 seconds. We have already discussed which is the most severe form of spina bifida. So the answer is C, that is Myelomeningocele. Very easy, we have discussed it. Now next question is, what protrudes from the baby's back in myelomeningocele? Okay, myelomeningocele. Very easy. So the answer is the meninges and the spinal cord both. We have already discussed that. Now next question is, there is a direct cause of spina bifida, true or false? Here are your 15 seconds. So till now there is no direct cause. Okay, there is no direct cause कि yes ये cause है जिसकी वजह से direct spina bifida होता है. No, they are seen in various syndromes, but एक जो most important factor है that is associated with the spina bifida is your low folic acid levels during the pregnancy. ये एक बहुत important role play करता है. So एक कोई confirmed direct cause is not known till now. Okay, now next question is, some symptoms of spina bifida or spinal injury include. Okay, here are 15 seconds. Very easy question. एंड ऑब्वियसली स्पाइन है तो ऑल ऑफ द अबव, यानी ब्लैडर बाउल कंट्रोल भी हो सकता है, लॉस, पैरालिसिस यस, एंड वीकनेस यस, ऑल द थिंग्स कैन बी सीन. Okay, so the answer is all of the above. Okay, now we'll have 3 very important case discussions or clinical scenario questions regarding the spine. Okay, so first is
a patient suffered fall from 4 meter, preserved motor strength 5/5, lower limb extremities में there is numbness, the sphincter dysfunction there it is preserved, yani sphincters are working normal, there are no pyramidal signs. This is the MRI. How would you treat this patient? So here are your 30 seconds for this question, then we'll discuss it अच्छे से. ओके सो सबसे पहले ट्रॉमा की हिस्ट्री है, पावरफुल है बट न्यूरोलॉजिकल पेन या न्यूरोलॉजिकल नमनेस इज देयर, no pyramidal sign, no sphincter dysfunctioning, and here you can see this is your S1, so L5, L4, L3, so there is fracture of L3. Here you can see very easily कि there is fracture of L3, and here you can see कि this is your vertebral body, these are spinous process, बीच में spinal column है, and it is the burst fracture. You can see burst fracture है, complete spine anterior and posterior, and this is also impinging the spinal cord leading to the compression. But अभी compression इतना ज़्यादा नहीं है कि there is loss of power. But yes, there is PLC injury यानी posterior column injury है. Okay, so there is compression of the spinal cord. So how will you treat the patient? Non-operative, no. ऑपरेटिव है क्योंकि इट इज अनस्टेबल, फ्रैक्चर भी अनस्टेबल है. ओके, नाउ ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा. अब लेमिनेक्टमी करोगे, पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन ओनली करोगे या बोथ? सो द आंसर विल बी बोथ. लेमिनेक्टमी, सिर्फ लेमिनेक्टमी से दिस बोन विल बी फ्री. ओके, सो इट विल रीइम्पिंज. सिर्फ पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन करोगे, सो जो पहले से ही कंप्रेशन है, यू नीड टू डीकम्प्रेस दैट पार्ट ऑल्सो. सो वी विल डू लेमिनेक्टमी विच इज नथिंग बट द डीकम्प्रेशन as well as the pedicle screw fixation. Okay, so the answer will be both B plus C. Okay, now ये what are the indications of the surgery? इसके लिए we have a grading which is called as the Tillix grading. Okay, so Tillix grading very important, ये आपको आनी चाहिए. तो first is classification is your Dennis classification, that is 3-point classification, 3 column, जिसमें anterior, middle and posterior column होते हैं. So in anterior column you have the anterior longitudinal ligament and 2/3 of the vertebra and the disc. In middle you have the 1/3 of the vertebra and the disc, and very important posterior longitudinal ligament. ठीक है, ये बहुत important है. ये बहुत कॉमन गलती है कि you don't remember कि posterior longitudinal ligament is not part of the posterior column, it is part of the middle column. So posterior column में you will have the entire vertebral arch, जिसमें transverse process, spinous process, interspinous ligament, supraspinous ligament, the ligamentum flavum, ये सारी चीजें होती है कि इसमें posterior column में. And posterior column की injury ही डिसाइड करती है इफ देयर इज इंडिकेशन फॉर सर्जरी और नॉट. सो इसमें टिलिक्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन 3 थिंग्स, एंड हर चीज का यू गिव द स्कोर, एंड स्कोर के बेसिस पे यू डिसाइड कि वेदर टू ऑपरेट और नॉट. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रैक्चर, द PCL दैट इज पोस्टीरियर कॉलम में इंजरी है कि नहीं है, एंड द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस. ओके, सो इसके हिसाब से 5 या उससे ज्यादा इज ऑपरेटिव, and 4 पे it depends on the choice of the surgeon. Okay, so अपने इस केस में if you see कि there is burst fracture, so 2, integrity of the PLC, it is injured. Okay, so it is 5. Okay, and neurological status, अभी सिर्फ nerve root हुआ है जिससे there is numbness, तो yes 2 और 1 के बीच में 2 होगा ही होगा. So all these are
going towards the operative treatment. In a case, in operative treatment में we do the decompression of the compressed nerve roots by laminectomy and fixing the bone with the help of the pedicle screw. Okay, so chance fracture क्या होता है? Chance fracture एक तरीके से एक single horizontal fracture होता है through the thoracolumbar spine. बर्स्ट फ्रैक्चर में इंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों वर्टिब्रल बॉडीज में फ्रैक्चर होता है. वेज फ्रैक्चर में सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर वर्टिब्रल फ्रैक्चर होता है. एंड इन वर्टिब्रा प्लेना यू विल हैव दैट the entire height of the vertebra is lost anteriorly as well as posteriorly. Okay, so very important, ये एक important question था एंड इससे बहुत सारी चीजें आपकी रिवाइज हो गई. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient presents with 6 weeks history of right side leg pain and paresthesia below the knee in the S1 dermatome. He has a mild backache, no fever and no weakness. Okay, pain intensity changes with position. It is mild in the morning and increases gradually. It is worse with sitting more than 30 minutes. Current management with NSAIDs and physical therapy is done. SLR is positive at 60 degrees. What would be the next step in management for this patient? And here is the MRI, and I'm giving you 30 seconds for this question. Okay. Okay, so first of all, history से there is mild neurological pain, paresthesia, but कोई भी अभी भी मोटर वीकनेस नहीं आई है. एंड ऑल्सो न्यूरोलॉजिक पेन है, ये पता चल गया कि SLR, अगर SLR 40 to 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव है यानी इट इज न्यूरोलॉजिकल पेन. ओके, सो and in MRI you can see this is your vertebral body, this is your spinal cord, this is your spinous process. Okay, and this is your intervertebral disc, and यहाँ पे you can see this is your herniation of the intervertebral disc. Okay, so continue with the non-operative treatment, no, because NSAIDs अभी भी ले रहा है, but still there is pain even 6 weeks से. एपिड्यूरल ट्रांसफोरामिना स्टेरॉइड इंजेक्शन, यस, ये आप लगा सकते हो. माइक्रो डिसेक्टमी एंड न्यूक्लियोप्लास्टी, नो, अभी ऑपरेटिव की जरूरत नहीं है बिकॉज ब्लैडर वो वीकनेस, मोटर वीकनेस नहीं आई है, एंड स्टिल देयर इज ओनली हर्निएशन. अभी तो एटलीस्ट एक्सट्रूजन या सीक्वेस्ट्रिक में नहीं हुई है, एक्सट्रूजन भी नहीं हुआ है. Okay, so what is extrusion, what is protrusion, what is herniation? Protrusion and herniation एक ही चीज है. Okay, so extrusion and all क्या होता है? Protrusion we'll study अभी. So operative तो नहीं करना अभी, and इससे भी काम नहीं चल रहा. So the best line of treatment will be to give a epidural or transforamen steroid injection. Okay, so this is your bulging, this is your herniation. Okay, so what are the stages? Stages जो होती है, first of all there is degeneration start होता है. See, this is your normal spine, बाहर होता है annulus fibrosis, and under there is a jelly like substance called as nucleus pulposus. Okay, so degeneration start होता है जिसमें the annulus fibrosis becomes weak. So first of all there is prolapse. Prolapse में क्या होता है? Annulus fibrosis and pulposus are both herniated, and but there is no breakage in the annulus fibrosis. In extrusion में this annulus fibrosis will break, but still there will be contact of the nucleus pulposus with the parent disc, and it will be just in front or in contact with the posterior ligament. लेकिन सिक्वेस्ट्रेड डिस्क या सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है कि दिस न्यूक्लियस पल्पोसिस जो होगा ये पेरेंट डिस्क के साथ कम्युनिकेशन लॉस कर देगा, एंड इट विल इम्पिंच द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट एंड इट विल पास थ्रू द posterior longitudinal ligament. Okay, so this is your sequestration.
ना डर्मेटोम की बात करते हैं तो दीज डर्मेटोम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद होने चाहिए। ओके, C1 C2 C3 C1 C2 C3 आर विद द सर्वाइकल एरिया। सर्वाइकल में देखते हैं, जैसे अगर आपके नी में न्यूरोलॉजिकल साइन है, कैसे एक्सटेंशन में है जिसमें भी सो और आपके साथ में एसोसिएटेड स्पाइन इंजरी, तो स्पाइन इंजरी किस लेवल पे उसको चेक करने के लिए वी डू दिस फॉलोइंग टेस्ट। सो C1 C2 C3 सर्वाइकल स्पाइन, C4 C5 शोल्डर, C6 C7 is for the elbow, C8 is for the thumb and T1 is for the finger. Now लोअर लिम्ब में L1 L2 हिप फ्लेक्शन के लिए, L3 for the knee extension, L4 L5 for the ankle dorsiflexion. ओके एंड इसमें L5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। L5 जो होता है ग्रेट टो के एक्सटेंशन के लिए होता है, चेक करते हैं। बाकी L4 L5 दोनों इज फॉर द dorsiflexion एंड S1 इज फॉर द plantar flexion एंड रेस्ट फॉर द bladder एंड रेक्टम मोटर सप्लाई। ओके, सो ये चीज आपको इंपॉर्टेंटली याद होनी चाहिए एटलीस्ट। अब C4 C5 में भी एक में शोल्डर का एलिवेशन है, एक में अबडक्शन है, इतना याद नहीं रहे अभी चलेगा, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि कौन सा डर्मेटोम या कौन से नर्व रूट्स का क्या एक्शन होता है। दीज आर कॉल्ड एज द मायोटोम्स। ओके, क्योंकि ये क्या है, दिस इज योर मोटर सप्लाई। सेंसरी सप्लाई वालों को बोलते हैं डर्मेटोम्स एंड मोटर सप्लाई वालों को बोलते हैं मायोटोम्स। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस। तो SLR अपन ने देखा था कि दीज आर कॉल्ड PIVD, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, अलग अलग टाइप्स की होती है। दी प्रोलैप्स, हर्निएशन, प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन, सीक्वेस्ट्रेक्शन। सो इसमें SLR इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फर्स्ट 40 डिग्रीज के बाद 40 टू 90 डिग्री के बीच में if there is pain, it is called as the neurological pain, and exact 45 degrees पे you will have the what pain, Paul's pain. Okay, it is called as the Paul's pain. अगर 90 डिग्री तक भी कोई पेन नहीं है, सो इट मीन्स कि कोई मैकेनिकल यानी कोई मसल के अंदर या लिगामेंट्स के अंदर there is some stress, उसकी वजह से there is pain. Okay, remember, and also PIVD के लिए one is your LASIK test, नाम से आता है, नाम याद होना चाहिए कि इसमें फ्लेक्शन एट नी एंड हिप जॉइंट दोनों में होता है। फिर नी को आप एक्सटेंड करते हो और अगर आपके ऐसे पेन होता है देन यू कैन सस्पेक्ट सम डिस्क herniation. Okay, now next question is the patient is a 25-year-old female who presents with for evaluation of her spine. She has had noticeable deformity since puberty. The patient reports some mild backache following activity without any radicular pain, numbness or weakness. A focused physical examination of the spine shows severe thoracic deformity and associated rib hump. There are no motor sensory defects and reflexes are normal. How would you manage this patient? And the X-ray is given below, and here are your options, and I'm giving you 30 seconds to answer this question. Okay, so सबसे पहले what is this? There is lateral curvature. It is called as the scoliosis. Kyphosis क्या होता है? Forward bending. So this is a typical case of scoliosis, and deformity is since puberty. So it is not congenital, but it is structural. So structural के अंदर it is the idiopathic type of scoliosis, which is the most common type of scoliosis. Okay, and this scoliosis में the major deformity is in the thoracic region. That's why there is formation of the rib hump. Now how would you manage this patient? Because कोई भी neurological signs and symptoms या deficit नहीं है, motor sensory both are intact. So सिर्फ physiotherapy से सब काम नहीं चलेगा, because
अभी भी 25-year-old फीमेल है, सो यू नीड टू you need to reduce the progression of this deformity. Okay, traction with physiotherapy, no. Operate with posterior fusion or any of the others. So the choice nowadays will be operation, because in recent advances या recent trend या recent guidelines भी यही है कि in case of young adults you should go for the operative treatment, that is the fusion. Okay, so the answer for this question will be operative. So structural scoliosis and दूसरा होता है नॉन स्ट्रक्चरल, लाइक पोस्चरल या ड्यू टू एनी पेल्विक डिफेक्ट या कॉम्पनसेटरी, एंड उस सेकंड इज द स्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल में इट इज ऑफ इडियोपैथिक और द कॉन्जेनाइटल, जिसमें से द मोस्ट कॉमनेस्ट इज योर इडियोपैथिक टाइप, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी अ permanent deformity in the structure of the vertebral column. Okay, it can be during infancy, childhood or adolescence, and most commonly, and it is in the thoracic scoliosis, and it is the most severe also, and there will be formation of this rib hump. Okay, see, I have a photo of rib hump where it is. Yes, this is your rib hump. Okay, due to the thoracic scoliosis, this is called as the rib hump. Okay, so and in the lumbar region में moderate deformities can be can get unnoticed, because जो compensatory curvature होता है उससे वो mask हो जाता है, and it will grow, the deformity will grow until there is skeletal growth. Okay, so वो कैसे चेक करते हैं, उसमें you have a research sign, अब वो अपन अभी देखेंगे ना. व्हाट इज कॉन्जेनाइटल, नाम से पता चल रहा है कॉन्जेनाइटल होगा. सो कॉन्जेनाइटल है तो देयर विल बी अ पक्का से देयर विल बी अ डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्टिब्रा और वर्टिब्रल कॉलम. सो डिफेक्ट इन वर्टिब्री formation, and it can be hemivertebrae. नाम से पता चल रहा है that only one half of the vertebrae will grow. Block vertebrae, both the vertebrae will be fused, and there will be can be a unsegmented bar, whereas जिसमें दो adjacent vertebrae जो होगा उसमें एक साइड में they will be joined. Okay, like this. यहाँ से आपको very अच्छे से clear हो जाएगा. See this is called your wedge vertebrae. ओके, एंड सी दिस वेज में दोनों का है, दोनों पार्ट्स की ग्रोथ है, बट एक की ज्यादा एक की कम है. दिस इज कॉल्ड एज वेज वर्टिब्री. इसमें देयर इज ग्रोथ ऑफ ओनली वन हाफ. दिस इज कॉल्ड एज योर हेमी वर्टिब्री, एंड हियर यू कैन सी one half is fused, so this is called as the congenital bar or the unsegmented bar, because there is failure of the segmentation. and अगर complete fusion होता है, this is called as the block vertebrae, जिसमें there is failure of segmentation in both the halves. Okay, bilateral failure of segmentation होता है, this is your block vertebrae. and अगर सिर्फ unilateral है तो this is your congenital bar. Okay, so here you can see hemivertebrae very easily you can appreciate, and यहाँ पे दोनों पूरे join है. this is your block vertebrae. Okay, so hemivertebrae, and this is your unsegmented bar. So failure of formation is your hemivertebrae or the wedge vertebrae, and failure of segmentation अगर unilateral है so it is your unsegmented bar, and अगर bilateral है it will be a block vertebrae. and most commonly जो होता है these are of mixed pattern. स्कोलियोसिस में मोस्ट कॉमनली, अगर कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस में मोस्ट कॉमन आपसे कोई पूछे तो इट विल बी द मिक्स्ड. हियर यू कैन सी अनसेगमेंटेड बार विथ हेमीवर्टिब्री. ओके, so this is your thoracic scoliosis के अंदर the rib hump. This is called your rib hump. Okay, now I was talking about कि कब तक deformity increase होगी, उसका वो डिपेंड करता है कि स्केलेटल ग्रोथ कब तक होगी. तो स्केलेटल ग्रोथ को चेक करने के लिए यू हैव दिस इलियक एपोफाइसिस. ओके, सो ये इलियक एपोफाइसिस में इफ देयर इज दिस
ब्लैकिश लाइन, डार्क लाइन, इसका मतलब अभी भी द बोन और द स्केलेटल ग्रोथ विल टेक प्लेस। ओके, तो जो देर इज दिस स्केल 1 2 3 4 एंड 5, तो अगर 5 है इसका मतलब स्केलेटल ग्रोथ अभी बहुत सारी होगी, और 0 है इसका मतलब द स्केलेटल ग्रोथ इज over. Okay, this is your research sign, and a very important thing associated with this scoliosis is your Cobb's angle. ओके, इससे डिफॉर्मिटी की सिवियरिटी का पता लगता है। ओके, सो जो फर्स्ट वर्टिब्रा जहाँ से डिफॉर्मिटी स्टार्ट होती है, इन द लास्ट वर्टिब्रा जहाँ तक डिफॉर्मिटी है, उसके बीच में जो एक एंगल होता है, दैट इज अ कॉब्स एंगल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज आस्क्ड एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन नीट पीजी 2020। ओके, सो अब नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, दैट इज एंड वर्टिब्री and neutral vertebrae. So the question now I guess will come ki Cobb's angle is between two end vertebrae or two neutral vertebrae. So end vertebrae क्या होती है? First vertebrae और the last vertebrae जिसमें there is defect और जिसमें there is deformity, है ना, main curvature में। Whereas the neutral vertebrae क्या होती है? Neutral vertebrae is the first vertebrae जहां से normal curvature start होता है या फिर end होता है। Okay, so this is your neutral vertebrae, this is your Cobb's angle, you can appreciate very easily। Okay, so treatment जो होता है scoliosis का, it depends on the type of the curve, the age of the onset and the site of the curve। Okay, and ये आप ध्यान रखना, congenital curves obviously congenitally होते हैं तो they will progress faster, and neurofibromatosis के साथ जो scoliosis होता है that also progress very faster। So younger the patient worse is the prognosis, because उतना ही ज्यादा अभी skeletal growth होनी बची है, and उसमें भी worst prognosis is of the thoracic curves। Okay, सो जनरल द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट कोई भी स्ट्रेट स्टिफ स्पाइन जो होती है, इट इज बेटर देन अ कर्व्ड फ्लेक्सिबल स्पाइन। ओके, तो एक स्ट्रेट स्टिफ स्पाइन इज मोर बेटर। सो पोस्टरल कर्व्स अगर है, नॉन स्ट्रक्चरल है, नॉन ऑपरेटिव होते हैं, लेकिन अब जो डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉब्स एंगल। सो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट एंगल है, बट मोस्ट कॉमनली जो सबसे कॉमन है, ज्यादा बार लिखा हुआ डिफरेंट बुक्स में, इट इज दैट इफ द स्ट्रक्चरल कर्व और द कर्व ऑफ द मेजर कर्वेचर is less than 30 degrees, then it can be managed with the non-operative methods। Okay, so remember this thing। Non-operative methods में you have this Milwaukee brace, दिस इज योर बॉस्टन्स ब्रेस, एंड दोनों का एक ही काम है, बस बॉस्टन्स ब्रेस जो होता है ये कॉस्मेटिकली मोर सुपीरियर है। ओके, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर टर्न बकल कास्ट और टर्न बकल ब्रेस, वेयर देयर इज बकल, जिससे यू कैन टाइट इट एंड reform the and deformity and correct the deformity। and एक और अलग टाइप का कास्ट होता है जिस इज कॉल्ड एज योर लोकलाइजर कास्ट। ओके, सो आपको नाम एंड इमेजेस याद रखनी है। अब ऑपरेटिव मेथड्स में पहले क्या होता था, प्री ऑपरेटिव ट्रैक्शंस लगाते थे, लाइक दिस क्वार्टरल ट्रैक्शन, दिस इज योर क्वार्टरल ट्रैक्शन, प्री ऑपरेटिव ट्रैक्शन, एंड दिस इज योर सॉरी हेलो पेल्विक डिस्ट्रैक्शन सिस्टम भी होता था, बट नाउडेज इट इज नॉट यूज्ड। नाउडेज अगर जरूरत, सर्जिकल टेक्निक्स आर सो गुड कि इट इज नॉट यूज्ड, एंड जनरली इंट्रा ऑपी यू प्रोवाइड पोस्ट ऑपरेटिवली ट्रैक्शन बाय different types of rods and the instruments। okay, so this is your Harrington rods or the Harrington distraction system, and this is your this Luke rods। okay, these are your Luke rods। so सिर्फ नाम याद होना चाहिए एंड फोटो याद कर लो तो बहुत अच्छा है। okay, so this was all about today's lecture। I guess आपको याद होगा, कल के लेक्चर में we'll discuss 5 things, रिवाइज करेंगे कि डायस्टोमेटोमाइलिया क्या है, डिप्लोमाइलिया क्या है, माइलोडिस्प्लेसिया क्या है, मेनिंजोसील क्या है, मेनिंजोमाइलोसील, माइलोसील, सिरिंजोमाइलोसील एंड सिरिंजोमेलिया। इन सब में एक बार क्विकली वील रिवाइज टुमारो। ओके,
So thanks for watching. We had 100% strike rate for the NEET PG okay ortho questions this year. All questions were from my lectures, special class, YouTube, the MCQs, the marathon, सब मिला के images, everything was covered. Okay, so you can trust us, you can trust Unacademy for NEET PG preparation. So thanks for watching the lecture. If you like the lecture, please like, share and subscribe, and you can subscribe using my code, that is Anshul B10, on any Unacademy subscription package, and you will get extra 10% off. Okay, so thanks for watching my lecture. Bye bye.